today I'm going to talk with you on the vaccines and importance of the vaccines in adolescence. This is my CV. बच्चों, आप जो भी adolescents है, youngs है, आप सब हमारे you are the future of India. आप सब भारत की आशा है. You are the hope of our India, and that's why adolescent is a very most responsible period of your life. You know, हम बहुत बार बोलते हैं कि बच्चे तो they are not having the responsibilities, but मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा responsibilities हम बच्चों पे है, because you are the future of our India. बच्चों, मुझे एक बात बताइए, which one is more affordable? Whether you will afford to have this helmet, or would you like to wear this bandage on your head? और ये सीन अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स मुझे मालूम है आप सबको लगता होगा कि नो, हेलमेट इज डेफिनेटली अफोर्डेबल. व्हाई? बिकॉज इट इज प्रिवेंटिंग द थ्रेट टू द लाइफ. हम हमेशा सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हम क्यों बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज वेरी इजी, इजंट इट? देन इट इज ऑलवेज चीपर, देन इट इज नॉन कॉम्प्लिकेटेड एंड इट डजंट नीड स्किल. फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे ख्याल से हेलमेट पहनना इजी भी है, चीपर भी है, इट इज नॉन कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज नॉट, आई मीन इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ स्किल. बट अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, isn't it? And the same thing is applicable for the health also. You know, there are many diseases in your age group and they are definitely preventable, and this is what today we are aiming and we are theming this program all about. There are thousands of deaths in the adolescent per year with the diseases like typhoid, like meningitis, like pneumonia, hepatitis, whooping cough, diphtheria, even the cancer of cervix. मतलब जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, जो मतलब फीमेल्स के अंदर में सबसे ज्यादा डेथ होती है, ये सब हम बचा सकते हैं अगर हमने प्रॉपरली वैक्सीनेशन किया तो. सो हाउ कैन यू सेव all this, or how can we prevent all these diseases? Of course, through the vaccination in the adolescence. आपके मम्मी पापा always they say that we have to protect our kids, isn't it? बच्चों, एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली द इम्यूनिटी इज, है ना. हम बहुत बार बोलते हैं इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी ज्यादा है, तो मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में व्हाट एग्जैक्टली द इम्यूनिटी इज. इम्यूनिटी इज नथिंग बट इट इज अ फाइटिंग पावर ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज रन थ्रू द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम के द्वारा ये हमारे शरीर में फाइटिंग पावर डेवलप हो जाती है. हम किसी भी इन्फेक्शन को जो फेस करते हैं, जिन्हें हम एंटीजन बोलते हैं, ये एंटीजन बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये एंटीजन वायरसेस हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी चीज जो हम आपके शरीर को इन्फेक्ट कर सकती है. जब इनका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर हो जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बनाती है. जिस तरह से चाइना, पाकिस्तान जब हमारे देश के ऊपर अटैक करते हैं तो उनको उनके साथ फाइट करने के लिए हमारे सैनिक काम करते हैं, उस तरह से एंटीबॉडीज दे फाइट्स विद दीज एंटीजेंस. जैसे कि हमारे सैनिक सारे दुश्मनों को एक सरीका मारते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटीजन. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे शरीर में चिकन पॉक्स की एंटीबॉडी तैयार हो गई होगी या होगी, तो वो शायद दूसरे जो एंटीजेन है उसे नहीं मारेंगी. इसलिए वैक्सीनेशन हर तरह के डिजीज के लिए अलग होता है. तो हम आज शॉर्ट में उसके बारे में आज चर्चा करने वाले. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दिस वैक्सीन वर्क्स. When you are sensitized with the antigens, either antigens or the vaccines, तो आपके बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, it produces the antibodies in your body. Most of the antibodies they remains in your body permanently. लेकिन अगर वो परमानेंट नहीं होते हैं तो वो कुछ सालों तक रहते हैं, जिन्हें हमें बूस्टर डोज के द्वारा और आगे शरीर में तैयार करना होता है. सो फ्रेंड्स, मैं आपके सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज नेवर से नो टू द वैक्सीन्स. जब भी आपका शेड्यूल हो या आपको एडवाइस किया गया हो तो आपने वैक्सीन्स लेना चाहिए. नाउ मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. Vaccination means to administer a vaccine in your body, which is mostly through the injection. Sometimes वो nasal या oral भी दी जाती है. And immunization is what happens in your body after vaccination, isn't it? Do you know this person? Yeah, this is a great scientist, Louis Pasteur. उन्होंने हमेशा कहा है कि जब मैं किसी डिसीज के बारे में सोचता हूं तो मैं उनके दवाई के बारे में नहीं सोचता, बट मैं उस डिसीज को भविष्य में ना होने देने के बारे में सोचता हूं. What a great thought, isn't it? इवन बिल गेट्स ने भी कहा है कि बगैर प्रिवेंशन की जो भी बीमारियां हैं उनमें ज्यादा खतरा होता है, ना केवल व्यक्ति को बट देश को भी खतरा हो जाता है. प्रिवेंशन हमें एक ही बार करना पड़ता है, लेकिन हमें इलाज बार बार करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, और कभी कभी जीवन भर भी करना पड़ सकता है. इसीलिए इम्यूनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिजीज प्रिवेंशन मेजर. फ्रेंड्स,
in India, there are 243 million adolescents who constitute almost 21% of the total population. बहुत ज़्यादा है हमारी population, इसलिए हमारे देश को young country भी कहा जाता है. And there are thousands of adolescents who died because of the communicable diseases that could have been prevented by vaccination, like meningitis, like whooping cough, like hepatitis, diphtheria, typhoid, pneumonia, and so many. Even the cancer of cervix, it contributes a heavy burden in the mortality of the females in the later age, and these all things can be definitely prevented by vaccination at the younger age, at the proper age, isn't it? There are two aims of vaccination in the adolescents: to create the immunity in the absence of natural boost due to the exposure of the particular disease. मतलब अगर for example किसी बच्चे को अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके शरीर में इम्यूनिटी नेचुरली डेवलप हो जाती है, और अगर उसके शरीर में ये नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई तो हम वैक्सीनेशन के द्वारा उनके शरीर में इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो परमानेंटली उस डिजीज से बचा जाए. और सेकंड एम इज टू बूस्ट द इम्यूनिटी स्टेटस दैट इज विनिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी इम्यूनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को टिटेनस का वैक्सीन बचपन में दिया गया है तो उसको बरकरार रखने के लिए हम दोबारा जब उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो दैट इज द सेकंड एम ऑफ द वैक्सीनेशन. Friends, the adolescent immunization in the India can be improved by strengthening of the healthcare system, by significant improvements in the healthcare functionaries to provide and to deliver the vaccines to the adolescent. और सबसे ज्यादा important है, हम तभी हमारा adolescent immunization status improve कर सकते हैं जब खुद बच्चों को टीकाकरण और उसका महत्व समझ में आएगा. बच्चों के टीकाकरण के द्वारा हम ये 14 भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं. फॉर एग्जांपल, डिफ्थेरिया, पोलियो, वुफिंग कफ, हेपेटाइटिस बी, मम्प्स, टिटानस, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकॉकल डिजीजेस, मीजल्स, मेनिंगोकॉकल डिजीजेस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, रूबेला एंड एचपीवी. So out of all these 14 different diseases, these four which are written in the red color, they are more important. That is HPV, then whooping cough, influenza, and meningococcal disease. Why they are important? Because HPV मतलब human papilloma virus, it causes around 247,663 cancers in the males as well as in the females in India. It's a huge number. And in India, 1 in the 3 whooping cough cases, they occurs in the adolescent age group. This is very important. And influenza affects almost 14 to 24% of the population of India, and 20 lakh hospitalization each year, which can be prevented by proper immunization against the influenza. And 21% meningococcal cases, they occurs in the adolescent age group between 11 to 24 years. And please note that almost 10 to 15% adolescents, they die in these diseases. So friends, the vaccination is a very integral part of your life. 2006 के पहले एडोलेसेंट्स के अंदर में केवल टिटेनस और डिफ्थेरिया का जो इम्यूनाइजेशन है वो होता था, लेकिन since last 10 years or since a decade now, there is we have introduced HPV vaccination, influenza, pertussis, and meningococcal vaccination in the list of adolescent protection. And according to the National Immunization Survey of Teens, the uptake of this vaccination is uneven and it is unsatisfactory. So it's a duty of every parent as well as the duty of the adolescent to be sure for your vaccination whenever needed. This is the recommended schedule of the vaccines of adolescents according to the CDC. I won't be going in detail because this is the information to be given to the doctors. This is the recommended adolescent immunization in India after 2016. In the age group, after the age group of 11 to 12 years, these are the 3 very needed vaccinations: Tdap, HPV, and annual influenza. Then catch-up vaccines. Catch-up means the person who has either missed or has not completed the schedule of the vaccines. They are called as catch-up. So catch-up vaccines are MMR, hepatitis B, typhoid, varicella, and hepatitis A. And high risk means sometimes you have to migrate in some places where the diseases are common, or you are coming in contact with the person who is already infected, or sometimes if a boy or a girl, unfortunately, she is receiving some of the medications chronically. For example, she is getting the doses of the steroids, or if some person is immunocompromised, or sometimes if she is having either HIV, then this group is in the high risk group. And that's why the pneumococcal vaccine, the meningococcal vaccine, the vaccine against the Japanese encephalitis, and cholera, rabies, this is registered authorities in the adolescents in India. Number 1 is HPV vaccine, then is the dengue vaccine, that is the vaccine against the flu, then Tdap, then MMR, then hepatitis B, the typhoid vaccine, the varicella vaccine, and hepatitis A vaccine. Now we are going to see in short about some important vaccines.
The first and most important is human papilloma virus vaccine. There are 100 types of HPV viruses identified, out of which 30 to 40 types they infect the anogenital region, causing the different cancers or warts in the boys and the girls. And the cancers with the cancer they will create in the later age. There are some low risk viruses, there are some high risk viruses, and out of these 100, 15 to 20 they are oncogenic. Oncogenic means which can create cancer in the body. Can you identify this figure? This is not the diagram of any ice cream. It is looking like a Dinshaw's or Wadia ice cream, but friends, this is the this is the human papilloma virus. And this 6, that is HPV 6, HPV 11, HPV 16, and 18. They are the viruses which is the cause for the cancer cervix in the female. You can see this chart showing the incidence of the cervical, anal, vulval, or penile or oropharyngeal cancer, and HPV cases are more than non-HPV cases, and that's why this vaccination is very important. Kind of vaccines for HPV, the quadrivalent and the bivalent. Both these vaccines, they covers the HPV infection of type 16 and 18, but the quadrivalent will prevent the 4 different strains, that is 6, 11, 16, and 18. You don't need to go in detail of that. The recommendations are the 2 doses should be given in the between the age of 9 years to 14 years. हमें 9 से 14 के बीच में 2 डोजेस देना है. 14 के बाद में 3 डोज हम बच्चों के लिए एडवोकेट करते हैं. एंड कैचअप वैक्सीन जो होती है, it is permitted up to the age of 45 years, मतलब 45 साल तक हम कैचअप वैक्सीन दे सकते हैं. और HPV वैक्सीन लेने के बाद में जो वल्वल मतलब जो वजाइना का जो कैंसर है या जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये सब की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे. एंड देयर इज अ रिडक्शन इन द एनोजेनिटल वॉर्ट्स, मतलब जो बच्चों को एनोजेनिटल रीजन पे वॉर्ट्स होते हैं, फोड़े आते हैं, उनका भी जो चांस है वो रिड्यूस हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द फ्लू वैक्सीन, एवरीबॉडी नोज द फ्लू. सो फ्लू वैक्सीन, फ्लू वायरसेस के 2 टाइप होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, एंड वैक्सीनेशंस भी उनकी 2 तरह की है. नंबर 1 इज इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन, जिसके अंदर में जो वायरस होता है उनको किल किया जाता है और उनको इनएक्टिवेट किया जाता है, वो एक तरह का वैक्सीन है. और दूसरा जो वैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, जिसके अंदर में जो वायरसेस है वो जिंदा है, बट उनकी जो डिसीज क्रिएट करने की कैपेसिटी है उसको खत्म किया हुआ रहता है. और ये जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये साल में हमेशा रिपीट करना होता है, बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर है वो ईयरली चेंज हो जाता है. Now, which person should get the flu vaccine? Again, I have already told you that children aged 6 months up to their 19th birthday should be given flu vaccine. सभी जो गर्भवती माताएं होती है उनको फ्लू वैक्सीन देना चाहिए. देन 50 साल के ऊपर में जितने लोग हैं उनको भी देना चाहिए. और कोई भी पर्सन जिसको बहुत क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, या HIV या कुछ भी डिजीज हो, उन्हें प्रेफरेबली देना चाहिए. और जो लोग नर्सिंग होम में या अदर केयर टेकिंग फैसिलिटीज में काम करते हैं, उन्हें फ्लू की वैक्सीन देनी चाहिए. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन इज Tdap वैक्सीन. Tdap is the recommended instead of TD, क्योंकि देखो Tdap means उसमें परट्यूसिस नाम के एक डिसीज की वैक्सीन ऐड है, और TD मतलब टिटानस एंड डिफ्थेरिया. लेकिन आज के दिन में हम TD की जगह पे Tdap वैक्सीन रिकमेंड करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि Tdap थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका जो हमें कवरेज मिलता है वो ज्यादा मिलता है, इसलिए कॉस्ट शुड नेवर बी ऑब्स्टेकल इन टेकिंग द वैक्सीनेशन ऑफ Tdap. और उसका कम से कम एज 7 years होना चाहिए. एंड 1 dose of Tdap vaccines to all adolescents should be given at the age of 11 to 12 years. Pertussis मतलब खांसी. According to WHO, इंडिया भारत के अंदर में 2016 के साल में टोटल केसेस वेयर 37,274. एंड इसमें जो है इसकी इम्यूनिटी 4 या 5 साल के बाद में कम हो जाती है, और 10 से 12 साल के उम्र में ऑलमोस्ट इसकी इम्यूनिटी, परट्यूसिस की इम्यूनिटी नील हो जाती है. और इसीलिए परट्यूसिस के सबसे ज्यादा जो केसेस हो जाते हैं वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट्स अ क्रिटिकल टाइम फॉर द एक्विजिशन ऑफ दिस परट्यूसिस. एडोलेसेंस इज द क्रिटिकल एज, isn't it? Now coming to the MMR, the minimum age is 9 months, and there were almost 71,726 cases of measles in India. Extremely sorry to interrupt. Yeah, madam. Yeah, I'm little bit. See, रूबेला हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कुछ तकलीफें नहीं देता है, लेकिन जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके बच्चों के अंदर में कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम बहुत ही भयंकर बीमारी देती है, इसलिए रूबेला का वैक्सीनेशन करना चाहिए. The other important vaccines are hepatitis B, typhoid,
Then this is varicella vaccination, this chicken pox, pneumococcal vaccine, meningococcal vaccine, and friends. Now I'm coming to the take home message, which is very important. Or please ध्यान से सुनिएगा. The first take home message is to wear helmet on the head is better than to wear the bandage, and prevention is always better than the cure everywhere. And likewise, the vaccinations are always better than the diseases. Okay, then treatment can be for multiple times, but the vaccination will be only for one time in your life. The adolescent immunization will produce the healthy future of India. Vaccination will protect you forever. Vaccination routinely recommended in the adolescent are Tdap, HPV, and influenza. And the other vaccinations are PCV, MCV, and hepatitis B. The catch-up dose of the missed vaccination can be given at any time. और सबसे important ये चीज है भाई दोस्तों कि preferred site of intramuscular vaccines in the adolescent is the upper arm in deltoid area. ये यहाँ पे दी जाती है and not on your pumps. सो दोस्तों कभी भी वैक्सीनेशन से डरना नहीं और वैक्सीनेशन से कभी घबराना नहीं और उससे कभी भागना भी नहीं. थैंक यू सो मच स्टाफ ऑफ माय हॉस्पिटल एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, डॉक्टर अल्पेश गांधी, डॉक्टर रागिनी मैडम एंड होल टीम ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ कमिटी, एंड स्पेशल थैंक्स टू माय मम्मी, पापा, माय वाइफ एंड माय यंग children, Vrinda and Chaitanya. Thank you so much.